Hello and welcome in this video. So today we are going to learn about the metal and non-metals for class 10th. So here is the first part of this chapter, that is the metals and non-metals. So in this chapter we are now going to understand about the metals, non-metals, metalloids and the few uses of metals. Okay, चलिए तो शुरू करते हैं. First part of this metals and non-metals. Clear? Okay, here we go. So students, what do you think about the metals and non-metals? So I tell you that the metals and non-metals and metalloids are the elements because they are the purest one. And you know very well because in previous classes you have already learned that elements are the purest form of any substance. Why? Because elements are prepared by single kind of atoms. Elements are prepared by single kind of atoms. Okay, or you can say that those substances which are prepared by the single type of elements, single type of atoms, that are called elements. So students, elements can be divided into the metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids. So metals, non-metals and metalloids are the part of periodic table, or you can say in another way that periodic table can be periodic table consists metals, non-metals and metalloids. Okay students, now move on. What are the definition of metals, non-metals and metalloids? क्या definition इनकी है? तो students, बहुत आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि मेटल्स वो सब्सटेंसेस या वो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी होती है. पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन. ठीक है, पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन. कोई भी मेटल है, अगर उसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, look at here, if it is losing the electron, so after losing the electron the metal will consist or acquire the positive charge. जितने इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा उतने पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएंगे. क्यों? मान लीजिए कि इस मेटल के अंदर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 ही प्रोटॉन इसके अंदर होंगे, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में जो कोई भी एलिमेंट होता है न्यूट्रल स्टेट में रहता है. ठीक है, तो अब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पर रहेगा 9 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन ओवर हियर, 9 इलेक्ट्रॉन्स. सो यू कैन से वेरी क्लियरली 10 is the greater number than the 9, and you also know that the proton consists of positive charge, so it will dominate. The charge of proton will dominate and hence the metal will acquire the positive charge, and that's why the elements which are having the property to lose the electron, they will convert into the positive ions, and the metals are doing the same thing. Metals are having the tendency to lose an electron to form the positive ion, that is cations. ये याद रखने वाली चीज़ है, positive ions, cations. Clear? It must also be noted over here that the hydrogen is an exception. हाइड्रोजन को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, मेटल की प्रॉपर्टी में काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, क्यों? बावजूद इसके कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी इसमें होती है, लेकिन इसको हम मेटल्स में काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म आता है, ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में. ठीक, in the another way you can also say that metals are electropositive elements. Why? Definitely because they are forming the positive ions, and hence the metals are electropositive elements. And also on the basis of electronic configuration you can say that the metals are those elements which are having at least 1 to 3 electrons in their outermost shell of an atom are called metals. Metals वो elements हैं जिनके एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 से 3, ठीक है, 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं? वो मेटल्स कहलाती हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, आयरन, सोडियम, पोटेशियम,
So many things are there. Because metals are generally found in the periodic table, you know very well, it will be present in the left hand side, in the middle, and at the bottom of the periodic table. At the bottom of the periodic table, I tell you that the metals are having a tendency to lose the electron to form the positive ions. That's why they are the electropositive elements. If another way, if you say that on the basis of electronic configuration, if you want to discuss about the metals, then you can say that those elements which are having at least 1 to 3 electrons in their outermost shell of an atom are called metals. Clear? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम के अंदर, सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल वाले को लूज कर देगा और क्या बना देगा? सोडियम आयन बना देगा. सो सोडियम इज हैविंग अ टेंडेंसी to lose an atom to form cation. That's why it is a metal. I think it is very easy to understand. Now move on the next topic, that is non-metal. Non-metals क्या होते हैं? तो मेटल्स के अंदर टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, नॉन मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की. ठीक है, तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है तो वो क्या कहलाता है? नॉन मेटल बोला जाता है. ठीक है, इट मीन्स दो सब्सटेंसेज और दोज एलिमेंट्स आर हैविंग अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. इट मीन्स कौन से एलिमेंट्स? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी हो. दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म anions are called non-metals. Say a very easy example, you can say that like chlorine, if it accepts the one electron, then it forms Cl negative ion. It forms Cl negative ion. क्यों? क्योंकि Cl के अंदर 17 ही प्रोटॉन होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ इफ इट इज गेनिंग द वन इलेक्ट्रॉन मोर, देन व्हाट हैपन? नाउ इट इज हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल. It is having not outermost, in the overall 18 electrons are here. So you can see now here are the 17 protons only, but 18 electrons are there. So the negative charge will dominate. कितना डोमिनेट कर रहा है? एक यूनिट. ठीक है, तो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज बनाता है और इसी नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं. इट मीन्स दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग द प्रॉपर्टी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स एंड आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. इन द सेम मैनर जैसा कि हमने मेटल्स में पढ़ा था, on the basis of electronic configuration, non-metals में क्या होगा? 4 to 8 electrons. Okay, if any element having 4 to 8 electrons in their outermost shell, then that particular element will be regarded as non-metal. उसे क्या बोला जाएगा? non-metal बोला जाएगा. जिनके outermost shell में 4 to 8 electrons होते हैं. जैसे आप मान के चलिए, आपने नाइट्रोजन आप देख लीजिए, नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 7. इसका जब कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो क्या आएगा? 2,5. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल? 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. हैंस नाइट्रोजन इज नॉन मेटल. नाइट्रोजन इज नॉन मेटल. यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हीलियम क्या होंगे? एक्सेप्शन होंगे. क्यों? क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. इसके लिए एक कंडीशन होती है बेटा. एक कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि जो आउटरमोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉनों वाली जो कंडीशन यहाँ पे बताई गई है, उसके अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो होने ज़रूरी हैं. उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स जो हैं वो होने ज़रूरी हैं. ठीक है, जैसा मैं आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बता रहा था कि हाइड्रोजन को क्यों नहीं कंसीडर किया जाता है, उसका मेन कारण यही है. ठीक है, उसके अंदर एक कंडीशन होती है. जैसे मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के अंदर ये फर्स्ट ऑर्बिट मौजूद है, और इस फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पर ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई और दूसरी ऑर्बिट नहीं है, तो इसको हम ये चीज़ यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड नहीं होती। इसके लिए उन्होंने क्या बताया है कि फर्स्ट ऑर्बिट तो मौजूद है ही, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो कंडीशन है उसके लिए अंदर वाली शेल भी होना ज़रूरी है। अब जब यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन मौजूद है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, तब बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और उस कंडीशन में इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। बट in the case of hydrogen and helium there is no second shell, only first shell is there, that's why the condition for the hydrogen and helium is not applicable. Clear? ठीक है। बहुत सारी जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, हमारी गैसेज हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेज एंड फ्यू आर सॉलिड्स. Bromine is only a non-metal which will be found in liquid state, Apart from bromine, many non-metals are there. You can take a very common examples like hydrogen, oxygen, neon, sulfur, carbon. They all are non-metals. Clear? नाउ मेटलॉइड्स, बहुत ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन इसकी नहीं है, बहुत आसान सी डेफिनेशन इसकी है कि दैट दो सब्सटेंसेस विच आर शोइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स, दे आर कॉल्ड द मेटलॉइड्स. इनके अंदर मेटलॉइड्स के अंदर क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. नॉर्मल कंडीशन में जो मेटलॉइड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, बट इन एक्सट्रीम कंडीशन इट विल बिहेव लाइक अ मेटल्स. ओके, जस्ट लाइक द सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे विल बी regarded as a semiconductors, because in a normal state it is not going to conduct the electricity, but if the condition provided, then they will behave like a conductors. Clear? So here are the examples of some metalloids. Clear, students? I think it is quite easy to understand. You may also note it down everything if needed. Now, as I told you earlier that on the basis of electronic configuration, how we will define the metals and non-metals. So here it is. Clear? Now, metals. यहाँ कुछ metals हैं जैसे lithium, beryllium, sodium, magnesium and aluminium. I have taken over here. So if we will see the atomic number of all the metals, you can see lithium 3, beryllium 4, sodium 11, magnesium 12, aluminium 13. तो जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो आप ये देख सकते हो कि के, एल और एम, ये तीन के अंदर ही इनका कंप्लीट हो गया. तो ये तीन ही मैंने यहाँ लिखा है. तो इसके अंदर आप देख सकते हो आउटर मोस्ट शेल को, लिथियम कंटेन्स ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, वाइल बेरिलियम कंटेन्स 2 and sodium, magnesium and aluminum contains 1, 2 and 3 electrons respectively. So the all metals which I have written over here, they are completing the conditions which I told you earlier. So that's why they all are metals. But if we see the non-metals, they'll contain only 4 to 6 electrons. 4 to 6 electrons. यहाँ पे कितना है, नाइट्रोजन के लास्ट में कितना, 5, ऑक्सीजन 6, सल्फर 6, क्लोरीन 7, argon 8. Clear? So they are fulfilling the conditions of non-metals because the outermost shell of these elements contain 5 to 8 electrons, and that's why they are non-metals. ये उन्हीं conditions को fulfill कर रहा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी. ठीक है. कार्बन होता है, कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, 2,4. It will also work as a non-metal. Clear? So I think
बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसके आउटर मोस्ट शेल को कंसीडर करते हैं, इनका एटॉमिक नंबर से इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ओके, नाउ मूव ऑन। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ पीरियोडिक लोकेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल? ये कहाँ होते हैं ये एलिमेंट्स? ठीक है, ये एलिमेंट्स कहाँ होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर? So this is the periodic table, and you can see the metals, metalloids and non-metals as shown by different colors. So metals is generally shown by the blue, metalloids is shown by the green color, and non-metal is shown by orange color. Clear? तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो भी अभी इससे पहले जो मैंने बताया था आपको कि that the metals are present at the top left, in the middle and at the bottom of the periodic table. Hydrogen is an exception only. Hydrogen is a non-metal, but still it is found at the top left position in the periodic table. Non-metals are present at top right, while the metalloids are very few in number, like boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium and polonium. ठीक है, चलिए। Now what are the uses? So in daily life we see the many uses of metals. बहुत सारी मेटल्स हम लोग यूज़ करते हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है, बावजूद उसके कुछ मेटल्स हैं जिसको हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, उनके कुछ यूजेस को हम यहाँ पर बता रहे हैं। यू मे ऑल्सो नोट इट डाउन। ओके, फर्स्ट इज द एल्यूमिनियम. First is aluminium. So here you can see and you can also understand by seeing this pictures that aluminium is used in the preparation of aircrafts, the preparation of trains, as in foil paper, in making utensils, in preparation of the wires, cables, pipes, so many things where the aluminium is generally used. ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमारे लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंस रखता है, जो कि कई जगह पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉपर. Definitely copper is a very good conductor of electricity, to that's why it is used in the making of wires and cables. I think I have to change the color because it is not visible, I think. Okay, so कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो जिसके लिए उसका यूज़ इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स बनाने में होता है. ठीक है, इन द अर्लियर एज इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मेकिंग कॉइन्स, हाउस होल्ड पर्पजेज, मेकिंग यूटेंसिल्स, सो मैनी यूजेस ऑफ कॉपर्स आर देयर. नेक्स्ट इज क्रोमियम. क्रोमियम का सबसे ज़्यादा यूज़ आपने देखा होगा निकल क्रोम प्लेटिंग के अंदर, बिकॉज क्रोमियम को हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जिससे आपने गाड़ियों के साइलेंसर्स देखे हैं, गाड़ियों के साइलेंस पर जो एक चमकदार पॉलिश रहती है, यूटेंसिल्स पर जो चमकदार पॉलिश रहती है. ठीक है, घरों के अंदर जो हम लोग टैप्स यूज़ करते हैं उसके अंदर जो एक शाइनी पॉलिश रहती है, दैट विल बी द क्रोम पॉलिश. गोल्ड एंड सिल्वर. So first of all, gold we are taking. Gold, definitely no need further to discuss about the gold, because gold is specially used in the ornaments, in making coins in earlier times. Nowadays it is also used in the dentistry, because some of the persons generally making the tooth from gold, सोने के दांत लगवा लेते हैं, तो डेंटिस्ट्री में इसका यूज़ होता है. सिल्वर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, इन मेकिंग कॉइन्स. खाने के अंदर इसका यूज़ काफ़ी होता है, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं. ठीक है, मेडिसिनल यूज़ इसका है गोल्ड का, सिल्वर का. नाउ नेक्स्ट इज निकल एंड आयरन. So first of all, nickel can also be used in the nickel cadmium batteries, making nickel coins को प्रिपेयर करने में भी निकल का यूज़ होता है. एलॉय बनाए जाते हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है.
Iron, I think no need to discuss any more about the iron, because everyone knows about the uses in making railway sleepers, in making bridges, gates, girders. आयरन एक स्ट्रॉन्ग मेटल जनरली रहती है, जो कि एक बेस प्रोवाइड कराती है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए. Clear? So here we have discussed about the metals, non-metals and metalloids, and the uses of some metals. Clear? I think it is quite easy to understand. You may repeat, you may pause the videos, you may write. Okay, so thank you for listening. Stay safe. Thank you. If you have any problem, then you can comment. Thank you.